हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लर्निंग चैनल अर्ग लर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। ये टॉपिक्स एमिन के ऊपर है जो 2026 3 जनवरी पे आया था और क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है ए इज ए न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ मोलिकुलर फार्मूला C8H9ON। इट कुड बी amide, probability is high, and on treatment with aqueous, bromine and alkali A forms a compound B। So ये जो कंपाउंड है A ब्रोमीन और से सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके और KOH से रिएक्शन करके कुछ कंपाउंड फॉर्म करेंगे। सो ये स्ट्राइक होना चाहिए माइंड पे कि ब्रोमीन और KOH का क्या रिएक्शन हो सकता है एमीन और एमाइड के ऊपर। सो ये हॉफमैन डिग्रेडेशन हो सकता है। हॉफमैन डिग्रेडेशन क्या है? व्हिच इज सिंथेसिस ऑफ एमीन from amide and this is applicable for primary amide only। तुरंत हम आंसर को एक बार देख लेते हैं for curiosity। So this is also amide, this is amide, this is amide and this is secondary amide। So secondary amide won't react with bromine and KOH, so this part is now deleted। So out of these three one would be the answer। It is for sure that it would be amide। So हम amide लिख ही लेते हैं। अभी क्वेश्चन है मिथाइल कहाँ पे आएंगे, क्योंकि तीनों मिथाइल है। ये तीन मिथाइल कहाँ पे आएंगे ये हमें डिसाइड करना है ये क्वेश्चन को सॉल्व करके। ये है एमाइड NH2 और कहीं पे भी मिथाइल हो सकता है, हियर 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 कहीं पे भी। ऑर्थो मेटा पैरा जो दिया गया है। ओके, सो फर्स्ट रिएक्शन है ब्रोमीन इन एल्केलाइन OH, इट वुड बी amide to amine। So this is Hofmann degradation। So methyl will be somewhere ortho meta para। Next question, which is soluble in dilute acid? Of course, if it is amine in there, then it is soluble in dilute acid। If it treated with HCl, then it will form salt NH3Cl। This is plus, this is minus, and it is soluble in water। B on treatment with aqueous sodium nitrite HCl produces a compound C। This is also a well-known reaction। This is dilutation reaction और we can say सैंडमेयर रिएक्शन। सो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है इसको आपको याद रखना ही होगा, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चंस। N2Cl होंगे प्लस माइनस, which on further treatment with copper cyanide to gives a compound। This is sandmeyer reaction, cyano। Hydrolysis of D produces compound E। अभी हाइड्रोलिसिस करेंगे हम इसको और मिथाइल ग्रुप कहीं पे भी होगा। हाइड्रोलिसिस करने से आइदर एमाइड होगा या तो एसिड होगा। CONH2, this will be partial hydrolysis and again further it will go hydrolysis reactions to give the corresponding acid। अभी दो प्रोबेबिलिटी हो सकता है, एक है आइदर एमाइड होगा which is again this one और एसिड होगा। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। ये E है which is also obtainable from hydrolysis of A। इसका मतलब है A एसिड ही होंगे क्योंकि ये मेंशन करके रखा है that this will further hydrolysis to give acids। This would be A and it is mentioned that compound E can be obtained from A also by further hydrolysis reactions। So this is the acid। E on treatment of acidified KMnO4 gives if। हमें पता नहीं कि KMnO4 में रिएक्शन क्या होता है, मैं भूल गया। Don't worry, something will be there। So this is acid। ये जो ऑक्सीडेशन है कौन सा ऑक्सीडेशन होंगे? लास्ट में क्या बोला? F contains two different type of hydrogen atom। F जो फॉर्म हुआ है it contains two type of hydrogen atom। One is this, another this should be the same and this is only possible if methyl group is at para positions and still there is 1 2 3 hydrogen but it is said that KMnO4 oxidation। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन में एसिड ही हो सकता है। If it is this, then you can see that there are two types of hydrogen। One is this, another is this। All four hydrogen are similar because this is a plane of symmetry। So these two hydrogen will be similar, these two hydrogen will be similar, and if we divide here, this is also plane of symmetry। So this two hydrogen is similar, this two hydrogen is similar। It means all four hydrogen are similar। What is two types of hydrogen? One is acidic hydrogen, one is aromatic hydrogen। So what would be the answer? The answer would be 3 because if it is 3 then and then only two types of hydrogen is possible because it undergoes oxidation reactions to give acid
and it also hydrolysis to give acid. This is very interesting questions, and I like these questions, and this type of questions is a true test for talented and hardworking students. So thank you very much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.